ओके बेटा जी, तो हम लोग क्वेश्चन 2 को दोबारा समझ रहे हैं क्योंकि आई हैव सीन मायराज एंड कीरज आंसर शीट दोनों का सेकंड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इनकरेक्ट है, इसीलिए हम लोग अभी एक बार सेकंड क्वेश्चन दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट आप लोगों का दोनों का करेक्ट है और आरव ने तो अभी लेट सबमिशन दिया है तो उसका चेक नहीं हो पाया, पर अभी हम एक बार क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा से डिस्कस करेंगे विद स्मार्ट ट्रिक एज वेल कि कैसे करते हैं इसको। If they're saying 2 1/5 plus 1 3/5 सॉल्व करने के लिए, तो what you will do, इसको होल नंबर पार्ट बोलते हैं बेटा, इसको फ्रैक्शन पार्ट बोलते हैं, इसको होल नंबर पार्ट बोलते हैं और इसको फ्रैक्शन पार्ट बोलते हैं। तो होल नंबर पार्ट को होल नंबर पार्ट से ऐड कर देंगे 2 + 1 इन वन ब्रैकेट एंड इन द अदर ब्रैकेट फ्रैक्शन पार्ट को फ्रैक्शन पार्ट से ऐड करेंगे 1/5 + 3/5। राइट और नॉट? तो 2 + 1 3, 1/5 और 3/5 लाइक फ्रैक्शंस है, तो इनके डिनोमिनेटर्स को एक ही बार लिखते हैं और ऊपर से नंबर्स को ऐड कर देते हैं। 1 + 3 is 4. So that's the final answer. How do you write that? 3 4/5. That's it. That's the answer. आया समझ में कि नहीं आया? Yes, आरव बेटा। मैम मेरे को ये पूछना था, जैसे मैम हमने यहाँ पे मैम आपने कहा ऊपर वाले में 1 + 3 कर दो, तो मैम अगर हम 1 + 3 नहीं करते और मैम तब भी हमारा आंसर तो आ जाता है। 1/3 किए बिना कैसे आंसर आएगा? 1 + 3 किए बिना? अच्छा यहाँ पे 3 आ रहा है, 2 + 1। हाँ, एंड मैम यहाँ पे ओके मैम, मैम सॉरी। अपने आप ही सॉल्व हो गया कंफ्यूजन? यस मैम। गुड। चलो एक और करें। That is 9 9/14 -5 3/14. मैम क्या करेंगे बेटा? रिदान, why is your camera off बेटा? मैम आई डोंट नो मैम, इट्स नॉट स्टार्टिंग। Switch on your camera quickly. अब this is about subtraction, no? तो अभी whole numbers को you subtract 9 - 5 and fractions को separately you subtract 9/14 - 3/14. Can you tell me what should be the final answer now? Yes, ma'am. Ma'am, first we'll subtract 9 - 5, which will be 4, which will be the whole number. Ma'am, and 9 - 3 is 6. 6/14. Very good. So 4 6/14. अभी ये isn't this looking like this 6 and 14? They can be simplified further. Yes, ma'am. So you have to do this. The 6 and 14 they have both got 2 as their common factor. So in your mind you will both divide by 2. है ना? So what is 6 divided by 2 you know is 3. And what is 14 divided by 2? That is 7. Right or not? And this you know that you should not write this. This divided by 2 you should not write. This should be in your brains only. Okay. Now what's the final presentation? How do you finally present your answer? This is 4 3/7. That's the answer. आ गई बात समझ में कि नहीं आई? Redan, is this clear or not? Yes, ma'am, it's clear. Okay. और करें पार्ट्स इसके, बाकी तो भी मैं ही करवाती हूँ अभी। फिर I'll give you some more questions, different questions as your homework. Okay. Ma'am, is my camera on? No, not yet. So next one, we're doing this one. 37 13/18 minus 24 7/18. बोलो अर्नव बेटा, नहीं बोलो आरव बेटा। मैम हमने उसको डिवाइड कौन से नंबर से किया था? प्रीवियस वन Yes, 2 से बेटू, 2 से, दोनों का कॉमन फैक्टर 2 था ना,
6 और 14 दोनों इवन नंबर्स हैं, 2 से डिवाइड हो सकते हैं. Ma'am, is my camera on now? Yes. It took you too long to settle, beta. Quickly, quickly. Where is your notebook? Have you started solving the questions? Ma'am, I was solving the entire time, but my camera was on. Okay, 37, 13. Ma'am, can you do this on our own? You want to do it by yourself? Yes, ma'am. Arav, Kirat, want to try? Go ahead and try. I'll pause record. If you will be like to verify, I'll record again. Ma'am, my answer is the whole number is 13 and the fraction is 3 upon 9. Yes, ma'am. Same thing. Ma'am, I got 13. मैम हमने इसको 6 से क्यों डिवाइड किया? Oh, did I explain you the entire question with my mic off? Yes, ma'am. Ma'am, how did you get 1 by 3? It should be like 3 by... Beta, 6 and 18, they are the multiples Yes, of ma'am. 6 only, no? They have a common factor 6. 6 ones are 6, 6 twos are 12, 6 threes are 18, do you remember? What about 2 and 3? Ma'am, they can be 2 What and 3. 2 and 3? हाँ, तो अगर आप उसको 6 by 18 को slowly करते हो, चलो मान लो पहले आपने divide by 2 किया तो, है ना? So this has become 3 and this has become 9. अभी 3 and 9 they both have 3 a common factor again, तो divide by 3 दोनों को once again. Okay, ma'am. 3 ये 1 and this is 3, तो 1 by 3 हो गया. But always keep that in mind कि ये जो है ये कभी नहीं लिखते हैं, ये सब आपके ब्रेन में होता है. ओके, Okay, ma'am. clear everyone or not? कराऊं सॉल्व बेटा और यू विल ट्राई इट बाय योरसेल्फ? करेंगे ट्राई. ओके, गुड बॉय. मैम Okay, so that's the final answer for the fourth part that we have done. Arav, Kirat and Vedant, check if your answer is the same. Ma'am, it's correct. Mine is the same. Good, good. Vedant, is your answer correct? Arav, I cannot see it, but is your answer correct? Okay, yes, very good, Arav, very good. Vedant, Vedant, I cannot hear you. मैम हमें सिर्फ माइनस में डिवाइड करना पड़ता है. नहीं, ऐसा नहीं है बेटा. 21 और 31 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, किसी एक टेबल में नहीं आते. 21 और 31 किसी एक टेबल में आते हैं, टेबल्स आते हैं ना अच्छे से. और तो जब किसी एक टेबल में 21 और 31 दोनों एक साथ नहीं आते तो उसको सिंप्लीफाई और कैसा करेंगे, कर ही नहीं सकते. Ma'am, I think he confused it with Understood? the 11th table. चले आगे. Yes, ma'am. What are you confused with, बच्चा? Kirat, what are you confused with? No, ma'am, I'm telling that Arav might be confused with the 11th table because ma'am it has. अच्छा, आप भी. रिधान बेटा, did you get the same answer or not? Unmute and tell me. You're muted and I cannot read. Okay, got it. Ma'am, I got the same answer. 21 by चले अभी. Good. So now we are solving question number 3. I'll do few for you.
and then you will do it by yourself. Ma'am, Okay. it's very simple. So I'm discussing the last part first. Eighth part I'm discussing first. That is 7 by 12 minus 1 by 2. You have to make both the denominators same first. You have to make both the fractions like fraction first to subtract two fractions. I've told you last time also, to subtract, to add, or to compare two fractions, you always have to make unlike fractions into like. Right or not? है ना? तो उनका denominator you have to make same, then only you can do it. Okay, now what's the trick of finding LCM orally? कैसा जल्दी से orally you can find the LCM? Tell me. मैम यहाँ पे सब चीजें मल्टीपल यूज करके मैम मैम जो बड़ा नंबर होता है वही इसका एलसीएम होता है. only the bada number can be the LCM if the smaller number is the multiple of that. So 2 can be the LCM if it is a multiple of 2. Is 12 a multiple of 2? Yes, ma'am. Yes, 2 6 are is 12, no? तो इसका मतलब yes 12 is the LCM. है ना? क्लियर हो गई ये बात की नहीं हुई? Okay. Now this I'll write 12 and this I'll write 12 क्योंकि दोनों को LCM ही बनाना है ना. ये जो नंबर्स है दोनों 12 और ये 2, इन दोनों को 12 और 12 ही बनाना है. तो इधर तो ऑलरेडी 12 है, तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर को अनचेंज कॉपी कर देंगे 7. राइट बेटा सी. देन वील पुट दिस माइनस का साइन and this to make this 2 into 12 I'll multiply that with 6, right? Same has to be done with the numerator as well. 1 6 is 6, so 6 is the numerator in this case, right or not? Yes, ma'am. Now that has become the question that you have solved in question number 1. These are the like fractions. Now write the LCM 1, 2, 12 and solve the numerator. 7 minus 6 is 1. 1 by 12 is the answer. From where did you not understand? Any one of you? Arav, Kirat, किधर कोई glitch आ रहा है? Yes, ma'am. किधर बोलो? मैम ये जो मल्टीप्लाई बाय 6 है इसे हमें अपने माइंड में रखना है. हाँ बेटो, ये पेज पे नहीं सॉल्व करेंगे, लिखना नहीं है. किरत, कोई डाउट बेटा? मैम. रिदान, कोई डाउट? अच्छा, तो अभी मेरे को एक बार जरा यहाँ पे ये डिस्कस करके बताओ कि कैन 21 भी दी एलसीएम है 14 एंड 21 का? मैम 21 cannot be the LCM of 14. Why? क्योंकि 14 times anything is not 21, है ना? So 21 cannot be the LCM, but you have to think of the multiples of 21. So what is the multiple of 21? Tell me. 21 ones are 21, 20, 42. Ma'am, 42 is divisible by 14. Sure, no? Pakka? Yes, So ma'am. 42 is the LCM. That is how you get it. देखो, one is the formal way of doing it like this. You do. So 7 2s are and 3s are you do, and then you do 2s are and 3, and then you do 3 like this. So that's how you get the answer. 7 6 are is 42. That's how you do it on paper. But when you want to Excel, so you will find LCM orally. Okay. So LCM of 14 and 21 is 42. Right now, beta? Yes. Clear now? Abhi, do this question further. That's now 5 by 14 minus 5 by 21, and we'll make both the denominators 42. And now, how to do it? How to do it now? Times, this is 14 times 3. So this also times 3. 15 minus, now this is 2s are and this is also 3. Okay. Right or not, everyone? How did I get the numerators? Did you get? Why 2 Okay. क्योंकि 21, अच्छा मैं तो आपको एक और ट्रिक बताती हूँ. हाउ टू नो दैट किससे मल्टीप्लाई करके 42 आए. ये जो 3 नंबर्स है ना एलसीएम के, दे विल टेल यू. अगर आप पेपर पे सॉल्व कर रहे हो कैसा, देखो 21 से 42 बनाना है ना, तो व्हाट इज 21? 7 3s are is 21. इनको छोड़ दो. Whatever number is left, 2 is left, 2 should you multiply with that. Ma'am, what about the 3 5 3 3 5 and 3? Come again, beta. Ma'am, what about the 3 into 5? What about the 3? ये वाला साइड, how do you think?
तो Yes, देखो, ma'am. अगर ये नहीं समझ में आया कि 14 को किससे मल्टीप्लाई करके 42 आएगा, तो देखो इधर इधर ध्यान से देखो, 14 7 2 14 होता है, इन दोनों को छोड़ दो, 3 इज लेफ्ट, तो आई मल्टीप्लाइड इट विद 3. दिस इज हाउ आई गेट इट वेरी क्विकली. ये जो एलसीएम के नंबर्स होते हैं, दे ओनली टेल यू कि द डिनोमिनेटर शुड बी मल्टीप्लाइड विद दिस नंबर टू गेट द एलसीएम, because you have made the LCM with these three numbers only, no, 7 2 and 3. So Ma'am, if but you what if have it 7 exceeds? 2s are 14 here already, so you multiply by 3 only. Ma'am, but then what's the point of doing it with the multiple trick? That you should use when you are very good at tables. So tables के साथ if you are good, you know 14 3s are is 42 beta, right or not? Abhi, what you people do, you start solving rest of the questions. I think now you will be able to do that, right? किसी को लग रहा है क्या अंडर कॉन्फिडेंट अभी भी? नहीं ना, कर लोगे ना? चलो सब ट्राई करो, चल. Okay, this is Kirat's doubt I am solving. 7 by 8 minus 2 by 3. 8 and 3 ka LCM is 24. Why? Because 8 and 3 are co-prime numbers. And when there are co-prime numbers as denominators, their product is their LCM. So 8 and 3 ka product is what? 24. Right? And now this, how to make this 8 24 but multiplying it with 3, same done with the numerator 21. Then you put this minus ka sign there. Then 3 go, how will you make 24? By multiplying it with 8. Same will be done to the numerator. 8 2s are 16. So now 21 minus 16 is what? That's 5. By 24. That's the answer. Got it, Kirat, or not? Right, beta ji. We are now discussing question number 5. Question number 4 was very simple that you can do by yourself. It goes on the same line as question number 2. Okay. So question number 5 we are discussing 7 by 10 plus 8 by 9 plus 16 by 15. तो अभी इन तीनों को ऐड करना है. दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस. तो पहला क्या करेंगे काम? सबसे पहले यू विल मेक देम लाइक फ्रैक्शंस, राइट? और अभी मैं 3 टर्म्स पे आपको ट्रिक नहीं सिखा रही हूँ, ऑल्दो दैट इज ऑल्सो सिमिलर टू द ट्रिक दैट यू हैव यूज्ड इन 2 नंबर्स. लेकिन अभी 3 नंबर्स पे ट्रिक नहीं सीखेंगे. फॉर्मली यू शुड गेट दी एलसीएम डन. कैसे करेंगे? 5 के टेबल में कट कर देते हैं. 5 2s are is 10. 9 is not divisible by 5. I'll write that as such. 15 divided by 5 is 3. Right? Now I see 2 with which are divisible by 3. I'm using 3. That's 3 ones are 3. 9 divided by 3 is 3. And this 2 is not divisible by 3. So I'll write 2 itself. Now I can do it by any number 2. I'm doing 3, writing as such 1. Dividing by 3, now writing everything as 1. So you do it till you get all the numbers as 1. Now what's the LCM? What I do, quick multiplication ke liye 5 2s are 10. That is 10. And 3 3s are is 9. So what's the product? 9 10s are is 90. 9 10s are is 90. So this is what your LCM is. Now how to make every denominator 90? कैसे करेंगे? इसको करो 9 से, इसको करो 9 से, इसको करो 9 से, इनको भी करो 9. अरे 9 से थोड़ी, बाय बैड बाय बैड बाय बैड. 10 को 90 बनाने के लिए you'll multiply it with 9. Same you'll do to this. 9 7s are 63. You'll write 63 here. Now 9 को 90 टर्न करने के लिए you'll multiply it with 10. इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. 8 10s are 80. 15 को 90 कैसा बना है? माइंड में ही क्लिक नहीं कर रहा है. तो क्या करेंगे? ये नंबर्स विल हेल्प यू. देखो कैसे. 15 is 5 3s are, तो इनको छुपा दो विद योर थंब. कट नहीं करना, इनको छुपा दो विद योर थंब. व्हाट इज लेफ्ट? 3 2s are is 6. तो यू मल्टीप्लाई दिस विद 6. अंडरस्टूड और नॉट बेटा जी? क्लियर है ना? अच्छे से? कोई प्रॉब्लम?
कोई प्रॉब्लम? मेरे को एक चीज समझ नहीं आई, 16 बोलो। अपॉन 16 अपॉन क्या? मैम 16/15 का मेरे को समझ नहीं आया। बेटा 15 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 90 बनेगा बच्चे? वो आपको यहाँ से इन नंबर्स ने बताया। देखो 5, 3, 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया था तो यू गॉट 90 एलसीएम। इसमें से 15 से क्या मल्टीप्लाई करो? 5 3 इज 15। 15 से क्या मल्टीप्लाई करो कि यू गेट 90? दिस यू हैव टू थिंक। तो वो तो यहाँ पे क्या है? दिस इज 3, 3 2 आर 6, तो 15 टाइम्स 6 इज 90, तो 6 से मल्टीप्लाई करना है। गेटिंग इट और नॉट? मैम आई थिंक द Now what will be the numerator? What is 16 times 6? 16 times 6 क्या होता है बताओ? मैम 16 90। कैसे करते हैं? मैंने ट्रिक कैसे बताई हुई है? 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो 6, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो 36, बीच के दो नंबर्स को ऐड कर दो 96। 96 मैंने बताया था ये ट्रिक टेबल्स का कि नहीं बताया था? अगर मैं आपसे कह रही हूँ 73 को 5 टाइम्स करना है तो कैसे करेंगे? 7 टाइम्स 5 इज 35, 2 डिजिट नंबर लिखा ना, एंड 5 3 इज 15। अभी क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे, सो दैट्स 365 इज द आंसर। आ रहा है समझ में? तो वैसा ही मैंने किया 16 टाइम्स 6 के लिए। 6 टाइम्स 1 इज 6, मैम उसको 2 डिजिट में लिखा, एंड 16 टाइम्स 6 इज 36, इसको भी 2 डिजिट लिखा, एंड मिडिल 2 टर्म्स को ऐड कर देते हैं तो 96 इज द आंसर। मैम आई थिंक the sixth question is the sixth question is 1/3, not Which sixth 5. question is not 1 by? क्या मुझे Sixth समझ में? part, ma'am. Sixth part of the third question. I don't think it's 5/12. It's 1/3. अभी we'll see to that. मुझे नहीं आता. Did I solve that for you? No, ma'am. We solved it on our own. You said my answer is right after checking it, after sending in the group. But I think 5/12 is wrong for that question. Question is 7/12 minus बेटा 1. सेकेंड वन तो I haven't even checked. अभी तो मैंने सिर्फ फर्स्ट ही देखा, उसका प्रेजेंटेशन ही बताया था. We started up with the next question then. First one is correct, 5/24. That is correct. Second one I have not checked even abhi. Oh yes, the numerator you have not changed it correctly. Yes, 3 ma'am. times आएगा उधर. Ma'am, it's 1/3. अभी I have not marked tick or cross there, but I'll do later. ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लें अभी. So adding all these together, मैं इस एरिया को क्लीन कर देती हूँ थोड़ा सा. Right, so we are adding 63, 80 and 96 together. Numerator सारे I am adding. Whatever signs they have given you, accordingly उसको numerator को solve कर दो. So that's 9. Now 8 and 9 is what? Is 17. And 17 and 6 is what? 23. 239 by 90. That's the answer. Wow. Ma'am, so that will be 239 by 90. Let's solve this. Yes, huh. If that can be further simplified, you will do it. If not, leave it like that only. Well, no, ma'am. I'm not simplifying it. 239, I think, is a prime number. So You it cannot think? be simple. अभी के लिए write that as such. जल्दी से, and then we are working on the next question. Ma'am, it is a prime number.